I got the paper. Super great. And in fact, तन्मय के मैं screenshot डाल रहा था यहाँ पे. So I went to IIM Bombay and I met तन्मय, which is really amazing. तो बहुत बहुत मजा. तन्मय तेरी फोटो मैंने अगले साल के बच्चों को बार बार दिखाई थी कि ऐसा हक करूँगा मैं तुम्हें. And this is the guy. So great यार, super. चलिए This भाई. was a really good photo, sir. It was a good photo यार. Super. हाँ, ये मंडे मोटिवेशन में स्क्रीनशॉट दिखाया था. ये देख दीप का मैसेज आया. तो तेरा मैसेज मैंने दिखाया था मंडे मोटिवेशन में, और आज यहाँ पे बैठे हुए हैं ये लोग कॉल एक्सपेक्ट करने के लिए. सुपर. चलिए भाई तन्मय, हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? आई एम बॉम्बे, लेट्स गो. Right. So there were two panelists, and I was lucky that I don't know how they forgot about the fact that they should have used BCC other than CC while writing the mail. So I Okay. was able to figure out who are going to be my panelists when they were setting up the meeting link. So I was, cunning enough that I checked their profiles on the internet. And I did some research, उनकी क्या profile है, what sort of background they come from. So one of the professors was from production background and one was from marketing background. So I was pretty sure that I should expect, both domain questions. So I prepared a little bit about marketing and a little bit about production and, manufacturing management. उसके अलावा mostly my interview was based on my profile. So it started off with my introduction, the hygiene questions, Yeah. why MBA. सॉरी टू इंटरप्ट यार. तन्मय एक बार थोड़ा अपना प्रोफाइल बता दे, और इंक्लूडिंग कैट पर्सनल लेवल, दैट बी ग्रेट हेल्प. हाँ. Sure. So I ended up scoring 98.34 in CAT 2021. My profile is 889, and I have about 1.5 years of experience in the IT sector. I have worked for Infosys for about a year and then about 6 months in a startup as a tech consultant. Post that, I ended up getting placed in Reliance Industries Limited for my summers. And I have gotten a PPO and I'll be joining as a Reliance Emerging Leader next year, 2024. सुपर ग्रेट यार. ये लीडरशिप प्रोग्राम बहुत अमेजिंग होते हैं. आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द लीडरशिप प्रोग्राम फ्रॉम जी. सो टैस का भी लीडरशिप प्रोग्राम होता है, जी का भी होता है, फिलिप्स का भी होता है. गिवन अ चांस ऑलवेज Right. वर्क हार्ड एंड गेट इनटू द लीडरशिप प्रोग्राम. यू आर द ब्लू आइड बॉयज ऑफ द कंपनी. विल डिस्कस दिस लेटर ऑन वंस यू आर एंटरिंग द बी स्कूल. ठीक है, ग्रेट. लेट्स टॉक अबाउट योर Right. इंटरव्यू. या, थैंक्स फॉर दैट. Yeah, so it started off with my introduction. So I gave about 1.5 minutes of my introduction. And then they asked me that you've already, done engineering, you've worked in the IT, so why do you want to do an MBA? And then they It's started 1 asking me a o'clock. few questions. Sorry? ओह दैट्स माय Oh, वॉच. सॉरी, okay. यहाँ पे 1 बज गया रात का. हाँ ठीक है, सॉरी. हाँ. Right. So yeah, so post that they started asking me a few questions about mechanical engineering, which was something which I was not expecting because I have work experience of about 1.5 years. Usually professors don't venture into your engineering, graduate degrees if you have, a little bit of experience. But they did venture into it and they were, trying to catch me in some or the other way. But yeah, so I was prepared in terms of my mechanical engineering as well. Probably they started asking me questions about mechanical engineering because they read in my profile that I have a gold medal in my BTech. So probably because of that they ventured into it. So yeah, they started checking my knowledge in mechanical engineering. Few questions, 3 to 4 questions, a few follow-up questions as well. Then they started asking me a few, details about my overall experience at Infosys, what kind of projects I was involved in. So I told them that I was actually working on mainframes. What exactly is the difference between mainframes and cloud? They started, venturing into the details of the project on which I was working on. Then they asked me a question that, you've recently joined a new firm. So like this interview happened in March and I joined Tech Healers. I left Infosys in the month of November. So like you've recently joined and now you're ditching the firm again. So, why do you think that, it's a good option to ditch the firm within 6 months and, join an MBA program? So that was another question.
Then okay, so one more thing which happens in IIM Bombay is that they make you fill 3 to 4 questions about 200, 300 words, and those they have those answers which you have written while filling the form, and they will definitely go through those answers and they will pick up stuff from those answers and they'll ask you questions about it. So I did feel that in my extracurriculars I feel that I was a part of a band so while I was living in my hometown in Jabalpur, and I was a lead vocalist there. So they started asking me that, okay, why are you not pursuing music as a career? Because that's also very lucrative. And they were joking around that we actually need good musicians and good lyricists in Bollywood because of late they've not been making really good music. Because of Tony So Kakkad? yeah, Okay. so yeah, so they were like, okay, so you write as well. Why don't you try your luck as a lyricist in commercial music and so stuff like that. So that was there, and then at the fag end of my interview, they asked me, okay, why do you want to join NEETI? At that time, it was NEETI, obviously. So that was something which I was able to answer because I was prepared with the fact that I want to pursue management, but I do have a little bit of inclination towards operations management. So that was my overall answer to it. That's great. Anything else? No, mostly this was it. Superb. Good. So they would ask you questions specifically which you have written in the application form, the answers which you have filled, and they will start picking up questions from your introduction as well. So mostly it will be based on the answers which you are giving in the interview or whatever you have mentioned during application. बहुत ही बढ़िया. अच्छा, एक और बात बता तन्मय, what all other calls you had at 98.34 percentile and कौन से इंटरव्यू दे के आया था तू? I had all the new and baby IIMs like CAP, Vizag, Amritsar, Nagpur. I had MDI, I had IIT Bombay, IIT Delhi, and yeah, that was it. क्या कौन से कन्वर्ट थे? Except IIT Delhi, I was able to convert all of them. All of them, no? Good यार, good. चलो बहुत ही बढ़िया. चल अभी आई नो आई एम गोइंग टू ट्रेन देम. अभी बहुत टाइम पड़ा, अभी लोग इनका जैड भी पड़ा हुआ है. बट व्हाट्स योर टेक ऑन, एक ओवरव्यू दे दे, मे बी 3-4 टॉप थिंग विच दे शुड प्रिपेयर राइट नाउ एंड ऑल्सो गिव देम अ लाइन ऑफ साइट ऑफ पीपीओ एज वेल. मैं इनको यही बोलता रहता हूँ कि दे जॉइन द जीडीपीआई प्रोग्राम राइट नाउ, तो पीपीओ को भी लाइन ऑफ साइट पे रखना है कि भाई अपने को विद इन 1 month इनका CV, विद इन 1 month सही कई स्कूल में लेस देन 1 month CV फ्रीज हो जाएगा, प्लेसमेंट कमेटी वाले आ जाएंगे, वो सब हो जाएगा. दे कैन नॉट मेक चेंजेस. And I always tell them current affairs are more or less similar. तो but तू बता यार, how was your journey? You're living that life right now. Right. So usually, if I have to strip it down the whole, VAT PI preparation, I would, divide it into 3 different points. The first point is the daily reading which you are doing. So, the stuff which you are reading on a daily basis is going to help you a lot. So I would suggest everyone to follow 3 different sources. The first is obviously the economic times, which is a little bit oblique for a start because not everyone will be able to grasp what is, being said in the articles which are written in economic times. But, that is something which they should inculcate as a habit because at the end of the day, they'll have to read it. If not now, they'll have to read it from the month of June itself. Yeah. So it's better to, inculcate, reading ET articles as a habit. So starting off with ET. Second would be you need to start following Live Mint. Live Mint is really good. We used to follow it for our summer placements because it helps you to get a grasp of a lot of topics which might come up in your group discussions. So not just group discussions which are going to happen for your admissions, but also for the summer placements as well. One new thing which I started following from from the month of Jan or Feb during my preparation was fin shots. So I really liked what they were doing. Not in shots, so fin shots. Oh, fin FINSHO. Yes. So in shots is also good. If you want to just go through what has happened the whole day, that's also amazing.
Yeah. So the best part about FinShots is that they have two different things which they offer. So if you follow them on LinkedIn or Instagram, they offer infographics. So infographics are basically एक slide में they will put a lot of data, and the data would comprise of a particular sector or a company or a group of company or conglomerate or something like that. So you would get a whole lot of information in just one post. So that is the first part, and you can also subscribe to their free newsletter. So what they offer in their free newsletter is that they would give you an article every day on your email, and those articles are basically based on a current business case which has happened recently, and they would use a very normal layman sort of language that everyone will be able to understand, and they would strip down the whole case to the very cellular level, so that none of the details are missed out in the information which they are providing. So these are the three sources which they should read starting from the day, maybe tomorrow if you want to start it. बिल्कुल सही है. Just to add, The second part would be you should do a lot of mirror interviewing. I'll come That to is that. something which I'll come to that. Just to Yeah. emphasize on the same information. यार ET कौन पढ़ते हैं? Just type in ET कौन पढ़ रहे हैं ET भाई? जल्दी बताओ फटाफट. सब लोग पढ़ रहे हो ना? बहुत बढ़िया. ET सब लोग पढ़ रहे हो. वेरी नाइस गुड. तो अभी ना आपके बिजनेस स्कूल के अंदर जाके सेशन होंगे हाउ टू रीड ET एज वेल. ठीक है. सो द वे यू रीडिंग ET राइट नाउ एंड द वे यू विल बी रीडिंग ET इज गोइंग बी टोटली डिफरेंट. टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना बंद कर दो. नहीं वैसे काम आएगा टाइम्स ऑफ इंडिया. आई टॉक अबाउट दैट. तो ET तो भाई आपको पढ़ाएंगे. वो भी आपको लग रहा है कि आपको सब समझ आ रही है, बट अगर लग रहा है तो बहुत बढ़िया. फिन बैकग्राउंड के हो, फिन इंडस्ट्री में काम करते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको समझ नहीं आ रही है. पिकअप लाइवमेंट. ओके, बहुत बढ़िया अखबार है ये. तो हार्ड कॉपी लगवा लो यार. ठीक है. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हार्ड थिंग्स, बट हार्ड कॉपी जब लग जाएगी ना तो फिर वो अपने बी स्कूल में कॉम्बिनेशन होते हैं ना, वो आते ही घर पे भी आ जाती है. राइट. वो सस्ता मिल जाता है. राइट. तो बहुत ही प्यारी अखबार है ये. आई एम अ बिग फैन ऑफ मिंट. सच्ची बता रहा हूँ, it's such an underrated newspaper, but the opinions what Mint gives, they explain you why they're giving. In fact, at a layman language, FDI की full form में ब्रैकेट में लिखा होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. FIA क्या ब्रैकेट में लिखा होगा. और वो ऐसा नहीं, वो आज से नहीं, वो मेरे टाइम पे भी लिखा रहा है. तो बहुत ही प्यारी अखबार है, वो पढ़ना शुरू करो. वो एंड FinShots इज अ न्यू थिंग. जस्ट टू एड ऑन, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू दोनों बढ़िया अखबारें हैं, बट उनका एडिटोरियल के अलावा बाकी सब धोखाधड़ी है. ठीक है. एडिटोरियल पढ़िए. एडिटोरियल के अंदर वो ओपिनियन आती है. ठीक है. स्पीकिंग ट्री वाला जो पार्ट होता है वो आपको फिलॉसफी बेस्ड थोड़ा ज्ञान दे देता है. एंड ना बीच में आई थिंक संडे को आता है, कब आता है, टॉक्स अबाउट व्यू एंड काउंटर व्यू. दैट्स लाइक रियली अमेजिंग. द बेस्ट थिंग अबाउट टाइम्स ऑफ इंडिया इज दैट व्यू एंड काउंटर व्यू. बट प्रो टिप फॉर एवरीवन, डोंट जस्ट डिस टाइम्स ऑफ इंडिया बिकॉज एवरीवन इज रीडिंग इट. वो जो बिजनेस स्कूल्स के अंदर ना ET और TI का कॉम्बो मिलता है. क्यों भाई तन्मय? हाँ. Yes. And business standard also. एंड बिजनेस स्टैंडर्ड तीन का कॉम्बो. बिल्कुल, 3 का कॉम्बो मिलता है, बहुत सस्ते में मिलता है. तो हर प्रोफेसर वो पढ़ के आता है. लिख लो कहीं पे बिजनेस स्टैंडर्ड ET टाइम्स ऑफ इंडिया. कुछ नहीं है तो उसका फ्रंट पेज आर्टिकल और जो मेजर आर्टिकल की न्यूज़ होती है ना बिजनेस स्टैंडर्ड, वो पक्का पढ़ के जाने का. डिपेंडिंग ऑन सम स्कूल देव गॉट टाई विद इंडिया टुडे ऑफ द वर्ल्ड, सम स्कूल देव गॉट, आई कम टू दैट. जस्ट टू ऐड ऑन, वन ऑफ द वीकली मैगजीन तो लगवा ही लो भी बैठ के. ठीक है. एनी वन वीकली मैगजीन. इट कुड बी योर द वीक करके आती है. और कौन सी होती है? बिजनेस टुडे होती है. नहीं, जनरल मैगजीन कोई नाम बताया. आउटलुक होती है. इंडिया टुडे होती है. इनमें से कोई भी उठा लो. और एक और ऐड कर सकते हो आप लोग, एक वन फाइनेंशियल मैगजीन कोई भी. वो फाइनेंशियल मैगजीन कुड बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल मनी, आउटलुक मनी. हाँ, ये भी आप कर सकते हो. और यहाँ फाइनेंशियल है, बिजनेस मैगजीन है, आउटलुक मनी. देन यू कैन ऑल्सो टाइप बिजनेस स्टैंडर्ड. तो जो लोग IIM बॉम्बे में जा रहे हो, तुम्हें प्रो टिप मिल गया बिजनेस स्टैंडर्ड. एंड देन बिजनेस वीक भी पता नहीं आजकल आती है कि नहीं आती है, बट ये सब चीज़ें. और FT भी आती है, फाइनेंशियल टाइम्स की भी कोई, क्या होता है उसका नाम, फाइनेंशियल टाइम्स भी होता है ना, एक वो भी आती है. पिकअप एनीथिंग फॉर श्योर. ये सब हार्ड कॉपी वाली हैं. यू गेस कैन पिकअप फोर्ब्स, यू कैन पिकअप द इकोनॉमिस्ट, यू गेस कैन पिकअप एनीथिंग. बट ये पढ़ना ही पढ़ना है. जो उनका मेन आर्टिकल होता है ना, दोज मेन आर्टिकल्स आर रियली वर्थ इट. यू कैन पिकअप वीडियोज ऑन यूट्यूब. यू कैन लर्न फ्रॉम एनी वेयर. ऑफकोर्स आई एम जस्ट सेइंग, ये घर पे बंदा पढ़ के आया था. आई श्योर ऑन गॉड वेन एवर आई गोज यूज टू टेक इंटरव्यू, तो मैं उस दिन की रोज अखबार पढ़ पाऊँ नहीं पढ़ पाऊँ, उस दिन की अखबार पक्का पढ़ता था. व्हेन आई यूज्ड टू टेक इंटरव्यूज फॉर वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स इन द कंट्री. राइट. तो वो पक्का पड़ेगा फ्रंट पेज के अंदर, बिकॉज पीपल कैन आस्क यू व्हाट यू रीड. हैव यू रेड टुडेज न्यूज़पेपर इन मेनी ऑफ द IIM's इंटरव्यूज इन कैप, इन रोहतक एज वेल. ठीक है, डन, ग्रेट. हाँ, सॉरी यार, चल तन्मय, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग योर टॉक. आगे बढ़ते हैं. Sorry, sir. Yeah, so that was the first part, which is daily reading. The second would be the hygiene questions.
So you need to cover, the whole set of hygiene questions as soon as possible. And when I tell you to cover them, I just don't want you to just, chat GPT the answers. You need to have a personal touch to all the answers. So, that is something which I have seen. People have been using chat GPT to frame their answers. It's a good tool, but it's a tool for you to assist, not a tool to generate the answers. So you generate your own answers, you write them, and then maybe use ChatGPT to enhance the overall picture of the answer. So, the introduction. So usually we prepare three introductions. क्योंकि हमको we might encounter three different types of situations while our interviews. So we usually tell everyone to prepare three different introductions, which is 30 seconds, 1 minute, and 1.5 minutes. Because at times you might find that panelist is already bored. Because I'll tell you, so my name starts with P, and most of the times it's in alphabetical order. So I'll be put in the last, at the last of the whole sequence. So most of the times the interviewer would already be burnt out. Yeah. So at times you might have to, give a very short introduction. So you need to be ready with that as well, because if in case you are not prepared with it, then 30 seconds intro, cutting short your 1.5 minutes intro on the spot would be very difficult. So it's always good to be ready with a 30-second intro as well. So that is there. Then, the other hygiene questions. Why MBA? Why you have done engineering? Why you have done bachelor's of arts? Why you have done, अच्छे से whatever bachelor's you have done. पहला क्लास है, अभी नया नया कैट पर्सनल आया, अभी इनको वाटर हाइजीन क्वेश्चन पूछना, थोड़ा प्यार से बता वाई MBA हो गया और क्या होता है. Why MBA? Why MBA after the the stream which you took? If you are a fresher, why didn't you work before getting an MBA? If you have worked more than 3 years, why have you worked for 3 years before getting before you actually wanted to get into an MBA? So all these sort of questions. Why do you want to join a specific college? Like, for example, if you're sitting in MDI interview, why would you choose MDI over IIM Indore or IIM Mumbai, for example? So, like, I was asked that what all calls are there for my MDI interview. I was asked that what all calls do you have, and then he actually wanted me to rate, in the order of my preference. So that's a very difficult question to answer. In my MDI interview, he literally told me that you need to rate your preference. कि जो तुम्हारे calls है कौन से में पहले जाओगे. And now you're stuck. That whether you should mark MDI really on your first preference because you're sitting in an MDI interview, or you need to be brutally honest that okay, I would prefer IIM Mumbai over MDI because of so and so reason. So those sort of questions you need to prepare. या पीपल वांट टू नो द आंसर्स एज वेल. अच्छा भाई, सब लोग आंसर्स पूछ रहे हैं यार, डिटेल बहुत टाइम पड़ा अपने पास, ये मेरे को 4-5 सेशन लगेंगे. ये जो तन में आपको हिंट दे रहा ना, इसका एकदम डिटेल्ड आंसर करेंगे अपन. या तन में तेरे सेशन याद है अपन बैठ के वो पूरा एक क्वेश्चन, तो वो आप मेरे पे छोड़ दो वो. आई नो यू फील लाइक गेटिंग द आंसर राइट नाउ, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर ओन आंसर्स. विल गिव यू अ फ्रेमवर्क, यू नीड टू कॉपी दैट, बट तुम्हें उसके आगे बढ़ना चाहिए, राइट. बट एक क्विक प्रो टिप है कि किसी और को गाली नहीं देने का, राइट. अगर आई एम बॉम्बे बैठे भाई, आई एम बॉम्बे, तुम ही हो, तुम MD तो मैं जाऊँगा नहीं, MD जाऊँगा नहीं बोल सकते हो बीच में, ये नहीं बोल सकते मैं वो बेकार है टाइप. सो नेवर एवर डू दैट बिकॉज देन दिल क्रॉस क्वेश्चन यू एज वेल. एंड एक और क्वेश्चन किसी का आया नहीं वैसे. व्हाट डू यू गाइस थिंक, तुम बताओ मुझे चैट के अंदर, डू यू गाइस थिंक दे वुड नो कि तुम्हारे पास कौन सी कॉल्स हैं? येस और नो? Do you guys think they would know the calls? Yes, no. Okay, let's talk about IIMs. तुम लोग 99% लेवल बैठे हुए हैं यहाँ पे. हाँ भैया, बताइए काइंडा. यस, IIM अहमदाबाद वालों को पता होगा, बैंगलोर का क्या है, बैंगलोर वालों को पता होगा अहमदाबाद का क्या है. नो. यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड. अच्छा ठीक है, लोग बोल रहे हैं येस नो. अब मुझे तुम बताओ, अगर मैं तुम्हें एक लड़का दिखाता हूँ कि ये इसका 99.23 परसेंटाइल है और 4 साल वर्क एक्सपीरियंस है, इसके बैंगलोर की कॉल आने के चांस हैं, हाँ या ना बताइए. वो देख, आनंद ने पहले लिख दिया यस, बहुत बढ़िया. और तुम इतने होशियार हो गए हो, सब लोग यस करे हो. तुम्हारा जो पैनलिस्ट है उसको इतना नहीं पता होगा क्या. एक और लड़का है, उसका 10th-12 में 9 ग्रेड में भी 9 है, 999 लगा हुआ, 10 लगा हुआ है. एंड कौन सा IIM मिलना चाहिए उसको? एंड ही गॉट समवेयर अराउंड 99.23 परसेंटाइल विद 2 years एक्सपीरियंस. कौन सा IIM? इंदौर. अरे वाह, इतने होशियार हो तुम, क्या बात है ना भाई. और तुम बोल रहे हो पैनलिस्ट का को नहीं पता होगा.
ठीक है। तो तुक्का तो मार ही सकते हो यार, एग्जैक्टली नहीं पता होगा तो दे वुड नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट? सो डोंट एवर चीट, डोंट एवर हाइड। बीइंग ऑनेस्ट, दे नो एवरीथिंग बाय द वे, पता पता भी होता है सबको, ये तुक्के तो मारने की छोड़े, अंदाज़ा नहीं होगा परमीत, बिल्कुल सब कुछ पता होगा। ठीक है, ग्रेट। हाँ जी, आगे बताइए, व्हाट एल्स यू वांट टू ऐड तन्मय? Right. So one last bit before we end the hygiene questions, Pastor. So what what worked for me was that I was really good at making stories around the question. So मेरा ऐसा रहता था कि I would pitch a story around every answer, so that it also gives a personal touch to the whole answer, and it also makes it unique, because otherwise everyone will be making the same answers, staple answers रहते हैं mostly. So if you want to give it a personal touch, it's always good to use your storytelling skills. If you don't have it, it's good to have, because that will help you in your whole MBA journey as well. So that is one thing. The next and the last basket would be how you would prepare for GDs and interviews. So I'll tell you, I used to do a lot of mirror interviewing. That was one and the most important thing which I did, because it's very important to have a certain flow while you are giving your answers. Because if you are not very much fluent while you're speaking what you are speaking, it reflects the fact that probably you are not that much confident. So if you want to reflect that you are very confident about what you're speaking, and you are not lying about what you're speaking, you are being brutally honest. So it's very important that you have a certain amount of flow, with which you are speaking, because you're not being smooth. Probably they will think that you are not that much honest about what you're speaking, or probably you're not that confident. So that is one thing. The other thing is group discussions, although आजकल नहीं होते हैं, most of the admission processes don't conduct group discussions, but it's always good to have a group discussion if you have a group of friends. So I'll tell you, जो हमारा एक group था, we had this repeaters batch group, हाँ. because I was there in the repeaters batch. So while preparing, we formed a group. कि हम लोग we used to have a camaraderie of 3 to 4 people. So we ended up forming a group, and then that group expanded to about 10 to 11 people by the time we got our CAT results. And everyone scored amazing percentiles. Everyone was above 98. So we all were pretty sure that we'll end up getting some good calls. So what we did is, apart from the preparation which we were doing with CAT King sessions, we used to have a daily quick call, which we used to call it a catch-up call. We used to have it every day, and I believe most of us were working. So what we used to do is, we just used to discuss how our day went and what all things we read, like maybe a news or something which happened in our society or something like that. So this also helped us, in case we missed out something while reading news as well, some or the other guy from the group would definitely catch up on it. So इससे ना what happens is, you don't miss out on important things which are happening in the world. Plus, in case if there's someone who is not very much confident about their English speaking skills, and they are probably not that good at communicating. Probably there are a lot of people who would get a really good CAT percentile, but they're not very much confident about the way they speak English. And to be brutally honest, it's not a good thing. But at the end of the day, you'll have to speak English. There is no other way out of it. So it's always good to make such groups, so that this not only helps you in preparing yourself well, but this will also boost up your confidence, and it will also help you in improving your communication skills as well. Superb, yeah. So And these would be my 3 things. that's really amazing. And boys and girls, 80% research says that 80% of the interviews are won because of communication skills, the way you can express yourself. Absolutely. तो तो अगर तुम्हारी कॉम स्किल्स सही नहीं है, तो कहाँ अहमदाबाद कॉल और कहाँ लखनऊ बैठोगे, और कहाँ लखनऊ कॉल और कहाँ इंदौर बैठोगे, और इंदौर से कैब बैठोगे, एंड दिस वन कॉल मेक योर डिग्री चेंज. मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ. सो MBA डिग्री इज गोइंग टू बी योर शोल्डर फॉर द नेक्स्ट 40 years of your life, assuming you're 21, 22, 23 and you're going to be working till 60, which you can't change. और वहाँ के उसके लिए बैठ के तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, बैठ रहे हो, ऐसे टाइम पास कर रहे हो, होगा नहीं यार, होगा नहीं.
राइट. अच्छा, वन पार्टिंग थॉट. आई नो तन्मय यू आर बिजी, आई एम गोना लेट यू गो, बट क्विकली ये बता दें, ये जीडीपी तैयारी इनको इंटरव्यूज के अंदर भी हेल्प करेगी? Definitely, definitely. Yeah. Because I'll tell you, most of the interviews जितने आप दोगे ना, 70% of the interview would remain the same. 30% of the interview would change while you sit for different colleges. So the overall theme of the interview remains the same, and that is why these preparation, courses and everything which we do at Crafting is very important. Superb, yeah, great. All right, this is so amazing. Boys and girls, a big thank you for Tanmay to spending time with us. This is really really amazing. Tanmay, thank you बोलो भाई इसको. और ये बड़ा आदमी है, एक बार इंटरव्यू कॉल लेके आओ. तन्मय आके तुम्हें जीडीपी के लिए बुलाने आएगा. तन्मय क्या बात है, सब थैंक यू. Most welcome, most welcome. बहुत ही बढ़िया, बहुत. और So, in case if you have any specific queries, I'm also a part of the mentorship program which we run at CatKing. In case if you have any specific query, you can book a free session with me. You can go to CatKing/mentorship. And you can also book a session with all the mentors which are there, and I'm also one of them. So if you have any specific queries, you can book a session with me. भर जाने वाला तेरा आज सेशन, वो तेरे सभी ब्लॉक कर लेंगे. देखो बहुत ही बढ़िया. तो तन्मय इज अ डियर फ्रेंड फ्रॉम, आई रिमेंबर बिफोर ज्वाइनिंग नेटी वी हैड अ कॉल एंड आफ्टर दैट ही इज इनसाइड. ग्रेट. इवन अ डायरेक्टर इज फैंटाबुलस गाय, लाइक रिसर्च वगैरह के ऊपर Yes. काफी बढ़िया कर रहे हैं मिस्टर You तिवारी. met him. You made a video with him as well, I believe. या इनफैक्ट तुम्हारा जब इनका ना, मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ 30 सेकंड की. तो इनका ना बोर्ड उतर रहा था निट्टी का, एंड वो आई एम बॉम्बे. तो तन्मय मेरे पास आया, सर देखो बोर्ड Right. उतर रहा है, एंड व्हाट्सएप ग्रुप में आया. मैंने बोला अच्छा सही है यार. एंड व्हेन आई वाज गोइंग बैक टू होम, आई स्टे इन पवाई ओनली, तो बोर्ड उतरता था. वहाँ बैठ के मैंने एक यूट्यूब लाइव किया था, पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं वो. तो या आई वाज प्रेजेंट ऑन दैट डे व्हेन द बोर्ड वाज गेटिंग डाउन. हाँ, और वड़ा पाव खा रहे थे. हाँ, क्या बात है, वही वाला दिन. चलो बढ़िया है. थैंक यू सो मच तन्मय फॉर योर टाइम यार. आई एम गोना कीप किलिंग इन एंड कीप कॉलिंग यू इन. एंड इस बार अपन कोशिश करते हैं 50 लोगों का तो आई एम बॉम्बे कन्वर्ट करवा के रहेंगे वंस द कॉल्स आर आउट. ठीक है. और बिल्कुल. अंदर ऑलरेडी हमारा पूरा गैंग पड़ ही रहा है, और तू तो है, यू आर लीडिंग इट फ्रॉम द फ्रंट, बट एंड यू आर रोल मॉडल. तेरा स्क्रीनशॉट दिखाया था मैंने चैट का इनको, एंड टुडे दे आर गेटिंग इट 99-98% एज वेल. सुपर यार. ठीक है, थैंक यू सो मच मैन. टेक केयर, हैव अ गुड नाइट तन्मय. आई विल गेट द कॉल विद यू. टेक केयर. Most welcome, sir. Most welcome. Cheers, And all the best, everyone. Cheers mate, cheers. Thank you so much. Take care. Bye bye.